Good morning, myself Dr. Manisha, Assistant Professor, Faculty of Physiotherapy Department in RPIIT Technical and Medical Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel in RPIIT Academics. If you like the content of this channel, please like, share and subscribe. Today I discuss about the NCV, Motor Nerve Conduction Study. The next one is this NCS represents the conduction of an impulse along peripheral motor nerve fibers. It is recorded as a compound evoked potential from a motor point within the muscle. The time it takes for electrical impulse to travel from the stimulation to the recording site is measured. This value called latency and measured in milliseconds. Size of the response called the amplitude and measured in millivolts. By stimulating in two or more differential locations along the same nerve, NCV across different segments can be measured. A motor nerve conduction study, it corresponds to the integrity of the motor unit but cannot distinguish between pre and post ganglionic lesions because the cell body is located in the spinal cord. It can be abnormal with the normal SNAPS if the lesion is proximal to the DRG or affecting a purely motor nerve. The active and reference pickup should not be too close together. If this occurs, similar waveforms are recorded at both sides and rejected, dropping the amplitude of the waveform. हमारे पास यह ग्राफ है, हम इसके अंदर देख सकते हैं कि पहले हमने स्टिमुलस दिया है, जब थोड़ा सा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एकदम रिलैक्सेशन के बाद फिर एकदम से हायर पे चला जाएगा, इस पीरियड को हम लेटेंसी बोलेंगे। और फिर हमारे पास क्या है, ग्राफ एक बार पीक पे जाके फिर वो स्लो हो जाएगा, तो फिर उस ग्राफ को जो बीच हमारा स्ट्रेट आ जाएगा तो उसको हम बेस लाइन टू पीक एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। और इफेक्ट जो है ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिंग, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टू ग्राफ है, एक हमारे पास क्या है नॉर्मल का है, दूसरा है क्या है पिकअप्स आर टू क्लोज। जो फर्स्ट है इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है, बट सेकंड में हमारा क्या है पिकअप्स आर टू क्लोज। मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी साइट, तो अगर हमें एनसीवी करनी है तो उसके लिए जो कौन कौन से साइट हमारी हो सकती है, जैसे मीडियन नर्व का हमने चेक करना है, राइट या लेफ़्ट का, तो हम रिस्ट से चेक करेंगे, एल्बो से चेक करेंगे, और मसल्स जो है हमारी abductor pollicis brevis होगी। और अल्नर नर्व को अगर हमें डायग्नोज करना है तो हम राइट और लेफ़्ट में क्या रिस्ट और एल्बो में, इसमें हम फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियस और abductor डिस्टाई मिनिमाई पे हम इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट करेंगे। अगर हमें लोअर लिम्ब की चेक करनी है तो नेक्स्ट वन हमारा है पिरोनियल नर्व, राइट और लेफ़्ट में एंकल और हेड ऑफ फ्यूबुला पे। तो मसल्स पे हमारी जो इलेक्ट्रोड की एनसीवी की प्लेसमेंट होगी वो कौन से मसल्स पे करेंगे हम, एक्सटेंसर डिजिटोरियम ब्रेविस और टिबियालिस एंटीरियर। टिबियल नर्व्स अगर चेक करनी है तो उसके लिए क्या है एंकल पे, और मसल्स जो हमारी कौन सी होगी वो है abductor hallucis और abductor distal quanti pedis। Next is sensory nerve conduction study. This NCS represents the conduction of an impulse along the sensory nerve fibers. It is performed by electrical stimulus of peripheral nerve and recording from a purely sensory portion of the nerve such as on a finger. Recording जो electrode is placed proximal to the stimulating electrode, antidromic nerve impulse is recorded like the motor studies. Sensory latencies are on the scale of the milliseconds. Sensory amplitudes are much smaller than the motor amplitudes, usually in the microvolt UV range. The sensory NCV is calculated based upon the latency and the distance between the stimulating and recording electrodes.
It can also used in localizing lesion in relation to the dorsal root ganglion or located in the neural foramen and contains the sensory cell body. Lesions proximal to it root spinal cord preserve the SNAP despite clinical sensory abnormalities. This is because axonal transport from the cell body to the axon continues to remain intact. SNAP are typically considered more sensitive than CMAPs in the detection of an incomplete peripheral nerve injury. Antidromic studies are easier to record a response than orthodromic studies are less uncomfortable when orthodromic studies secondary to less stimulation required have larger amplitude due to nerve being more superficial at the distal recorded sites. यहाँ पे हमारे पास देखो डायग्राम भी है। हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हमारी अब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि एनसीवी मशीन में हमारे पास क्या होता है, एक मॉनिटर होता है जहाँ पे क्या हम ग्राफ को देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, हमारे एक स्टिमुलेटर होता है, इलेक्ट्रोड्स होती है जो हम मसल्स के बेले पे रखते हैं, ओरिजिन और इंसर्शन पे रखते हैं उसको। ठीक है, अगर हमें कोई भी नर्व का एक्सटेंट जो है हमें चेक करना है, अगर हमने मान लो मीडियन अल्नर का चेक करना है या रेडियन का करना है या मीडियन का करना है, अगर हमने रेडियल का करना है तो हम जो है इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट जो है हम वो राइट साइड में ही करेंगे, और अगर हमने अल्नर का करना है तो हम लेफ़्ट साइड में करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या स्टिमुलस देंगे, और जैसे ही हम स्टिमुलस देंगे तो माइक्रो करंट जो होएगा वो मसल्स के अंदर से रन करेगा, और जो हमारे पास डिस्प्ले है उस पर हमारे को ग्राफ शो होएगा। तो ये सब कुछ होने के बाद हमारे पास जो ग्राफ निकलेगा उसके अंदर हम जो है हमारे पास एक ग्राफ बन के आ जाएगा। तो भाई नर्व का जो कितना एक्सटेंट जो है वो डैमेज हुआ है वो ग्राफ देख करके हमें पता चल जाएगा, या कितना नर्व जो है वो हमारा कंप्रेशन हुआ है।